Hello everyone, a very good afternoon. So, how are you everyone? Let's start the class. Hello everyone. Yes, let's start the class. Hello Shabnam. Yes, let's crack the CBSE Commerce. Crack the 12 CBSE Commerce with us, top educators, quality content, great learning experience. Let's crack the 12 CBSE Commerce. I'm Sneha Joshi. Crack the CBSE Class 12 with India's largest learning platform and get the subscription. Before getting the subscription, you will get the various benefits. Let's see what are the benefits: daily live classes, live tests, and the quizzes. Structured course, unlimited access means once you get a subscription you can see the, if you miss the live classes you can see the recorded classes as much as time you want. Okay, free live classes है. You will be able to interact with the top educators, get the motivations from the educators. Okay, just आपको कुछ नहीं करना, just download the Unacademy app on the smartphone and get the subscription. I also provide special class on Unacademy app at 9:30 p.m. Okay, Telegram app, just आप download करो Telegram app and just you can get the updates of my videos. So let us discuss about the fee structures. Fee structures क्या क्या है? 1 month, 3 month, 6 month, 2 month. Okay, 6 month and 12 month. I basically recommend कि आप लोग 12 month के कोर्स लो. देखो आपका रिविजन्स कंप्लीशन के साथ साथ सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिविजन्स भी है, डाउट सेशन भी है, एमसीक्यू है, मॉक टेस्ट में भी आप अपियर कर सकते हो. मीन्स इन वन कंप्लीट पैकेज. Okay, you can use my code to get the 10% discount. My code is Sneha10, SNEHA10. This code is applicable for any course. ऐसा नहीं है सिर्फ 11-12 के लिए ये कोड एप्लीकेबल है, ये कोड किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, whoever take the subscription from the Unacademy. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. आज का क्लास हम प्लानिंग के चैप्टर्स में जो जो हमने डिस्कशन किया था उसके रिविजन्स कराऊंगी, उसके बाद फिर लिमिटेशन स्टार्ट करेंगे हम. ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास. यस, प्लानिंग, व्हाट एग्जैक्टली द प्लानिंग. चलो हम डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड इट्स फीचर्स देखते पहले. लेट मी कनेक्ट माई पेन टैब. What exactly the planning means? Yes, Shabnam. What exactly the planning means? What do you mean by planning? Planning क्या होता है? Yes, last class में मैंने आपको पढ़ाया था planning. What is planning? Planning क्या है? Yes, everyone. Planning exactly क्या है? Let's see क्या होता है planning. Planning actually means decide in advance. That is what to do, how to do. क्या करना है, कैसे करना है, ये प्लानिंग हम डिसाइड करते हैं एडवांस में. एडवांस में प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फिर उसको फॉर्मुलेट करेंगे एक्शन प्लान टू अचीव देम. व्हाट इज प्लानिंग? वन सेकेंड.
Yes, planning, what exactly it means? It means deciding in advance. That is what to do, how to do. Yes, planning means setting the object, yeah, target and formulating the action plan to achieve them. Is it clear to everyone? Yes, let me start. Charger. Let's start where we go and what we want to do and how to do. Where we are. What is this? Where we are. Where we are. ये क्या है? Present. प्रेजेंट सिचुएशन ये आपका है, ये गैप है, ओके। गैप, हम फ्यूचर में कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, वेयर वी वांट्स टू गो। इट्स अ प्लानिंग इन एडवांस। आप प्लान जो भी करोगे वो एडवांस में प्लान करते हैं। देखो, प्लानिंग के डेफिनेशंस अगर आपको याद नहीं होते तो आप फीचर्स को एक एक करके फीचर्स ध्यान में रखो, और उसके बाद आप एक सेंटेंस फ्रेम करते हो तो आपका एक डेफिनेशंस बन सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे आप कीवर्ड्स याद कर सकते हो। द कीवर्ड्स क्या क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, ओके। इन्वॉल्व चॉइस, इन्वॉल्व चॉइस, okay. It is a primary functions, you can say it is a base of all the functions, first steps of the functions of the management. Primary functions also base of all the functions. It is all the keywords. अगर आपको ये सारे keywords ध्यान में होंगे तो आप planning के definitions खुद ही बना सकते हो, ठीक है। Bringing innovative ideas, planning also bring the innovative ideas, innovative ideas। अभी हम प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, मीनिंग समझेंगे, उस रिविजन है हमारा, उसके बाद फिर लिमिटेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग अगर किसी को याद होगा तो हम इंपॉर्टेंस में पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, या ओके। सो ये आपका क्या है, ये दिस ऑल आर कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स है आपके प्लानिंग के। यस, hi Shakila, okay। So thinking in advance involves the choice, primary functions, base of all the functions, bring innovative ideas and standard for control। It is all the about the planning, ये सारे plannings है, okay। Is it clear to everyone? Yes, let's move, हम features देखते, what are the features, क्या features है planning के। What are the features? Is anyone किसी को याद होगा features? बताओ मेरे को। शबनम, features, features मैं स्टार्ट करूंगी अभी। What are the features? features क्या है, क्या है प्लानिंग के features? प्लानिंग के features क्या है? What are the features of the planning? If anyone remembered, please answer, मेरे comment section पे comment करो। Yes, हेलो कुशल गर्ग, हेलो। फीचर्स डिस्कस कर रही हूँ मैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग? चलो देखते हैं फीचर्स क्या क्या है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजंस मेकिंग एंड प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। फीचर्स है प्लानिंग के, ओके। सो आई थिंक सबको क्लास में क्लियर होगा। चलो फिर भी मैं रिवाइज कराती हूँ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, क्या गोल्स है? पहले पहला स्टेज है क्या? गोल्स। प्लानिंग स्टार्ट विथ, यस शबनम, contribute to objective, primary functions of management, pervasive, futuristic, continuous, decision making, mental exercise। Very good,
Very good. So planning focus on achieving the objective. What are the planning जो है, planning is a start. Planning जो है वो start करता है with determining the objective. What are the objective? मतलब प्लान तो हम सोच ही नहीं सकते विदाउट द ऑब्जेक्टिव. कोई एम ही नहीं रहेगा, कोई गोल ही नहीं रहेगा, तो प्लानिंग फिर क्यों बनाएंगे. किसी गोल को अचीव करने के लिए हम प्लान सेट करते हैं. ओके, आफ्टर सेटिंग अप objective, planning decides the methods, procedure and step to be taken for the achievement of set objectives. ठीक है. So is it clear to everyone? Yes. Planning focus on achieving the objective. Company are set up with common goals in a view. Explicit purpose are placed out in the project along with the venture to be initiated to accomplish the goal. Therefore, planning is helpful. Without objective, you can't achieve the uh, goals. तो उस goals को achieve करने के लिए हम plan बनाते हैं. Okay, is it clear to everyone? नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी फंक्शंस है. प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शंस है, सेकेंडरी फंक्शंस नहीं है. ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशंस का. प्लानिंग इज अ प्राइमरी और यू कैन से इट इज अ फर्स्ट फंक्शन जो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है. इवन आप भी बोल सकते हो, आप भी अपने लाइफ में प्लानिंग जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन है. अगर गोल आपका सेट है कि आपको 12th में इतना मार्क्स लाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे. तो प्लानिंग फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है उससे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. तो सेम वे प्लानिंग जो है वो एक पहला स्टेज होता है. अगर आप वेकेशन मीन्स कि आपके डैड ने कहा कि आपको वेकेशन पे जाना है, मतलब नेक्स्ट वीक, तो आपका पहला स्टेप क्या होता है वेकेशन के लिए. यू स्टार्ट प्लानिंग कि व्हाट टू डू, क्या क्या शॉपिंग करना है, वहाँ क्या घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, व्हाट एवर. मतलब इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्लान. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर. कोई अदर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बाय मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शंस. कोई अदर फंक्शंस जो वो मैनेजर परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट द प्लानिंग फंक्शंस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेट अप इन द प्लानिंग एंड अदर फंक्शंस डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ओनली. एंड सारे फंक्शंस जो वो डिपेंड करते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव पे. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस जो होता है वो मैनेजर असाइन क्या करेगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, एम्प्लॉय को. नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट होते हैं, तो ये किसका किस पे डिपेंड करता है. जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Planning is the primary functions of management. पहला features हमने पढ़ा, planning focus on achieving the objectives. Planning is the primary functions of management. Planning is continuous. You can say it is a cycle just going on. ऐसा नहीं कि एक stage पे planning हो गया फिर revise नहीं हो सकता है. Yes, according to the market में जो demand है, अगर plan इनिशिएट हुआ उसके बाद कुछ चेंजेस अभी प्लान में चेंजेस हो सकता है, तो यू कैन से इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Planning are outlined for a particular period of times, perhaps for a period, a quarter or a year. At the completion of that period, there is a requirement for a new policy to be formed on the support of new condition and future circumstances. तो planning जो है वो आपका continuous process है. प्लानिंग आपका गोइंग ऑन प्रोसेस है. इट इज अ साइकिल. इफ यू मतलब क्या है कि अगर आप प्लान करते हैं बूम पीरियड में, मतलब उसके बाद कोई मतलब कि अचानक से मार्केट में कुछ लॉसेस आने लगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान में चेंजेस कर सकते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, प्लानिंग जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है. And plans are prepared for a specific period of time. Okay, these may be prepared for a day, week, a month, a quarter, for a year. At the end of a specific period, new plans are drawn and revised regularly on the basis of feedback on previous plan, new requirement and future conditions. Okay,
एग्जाम्पल्स यू कैन से दैट इफ प्लान आर प्रिपेयर ड्यूरिंग ए रेसेशन पीरियड, अगर प्लान हम बनाए हैं रेसेशन पीरियड में एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशंस and it during its execution the market plugged into a boom पे हो गया, तो planner need to have make several changes for the period or to work on a different strategy to achieve the desired goals. Okay, a company planned to sell 5,000 cars but due to flood the original plan cannot be implemented. कंपनी का ये था कि वो, yes Shabnam, I'm okay. Thanks for the concern. A company planned to sell 5,000 cars, but due to flood, the original plan cannot be implemented. ठीक है? The company will require changing its plan to achieve its sales target. So we can see that in both the above example, planning is not discontinued even for a while. मतलब planning जो वो discontinued नहीं हुआ, it's a going on, it's a cycle. You can say it is a cycle. Planning is just a cycle. Okay, planning is a futuristic, means it is based on assumptions. assumption पे based है. looking forward you can say कि past का planning हम नहीं करते, हम किसका करते, future के बारे में सोचते हैं, future में हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. means अगर आप रियल एग्जांपल्स लेते हो कि आपको 98%, अगर इफ आई गॉट द 98%, अब अगर मैं ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे तो सेम वे. हेलो, गुड आफ्टरनून निशा. प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन assumptions है आपका, मीन्स कि लुकिंग अहेड. और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शंस. प्लानिंग जो है वो कभी पास्ट के लिए हम प्लानिंग नहीं करते. जितने भी मैनेजर्स है वो क्या करते, वो प्रोडक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं. ओके, जैसे कि अगर predictions होता है ऑन द पास्ट विथ रेगुलर एंड इंटेलेक्चुअल स्कैनिंग, इसके लिए क्या, एक फ्यूचरिस्टिक एक गुड अजम्पशन के लिए मैनेजर को है वो क्रिएटिविटी इनोवेटिव आइडियाज लाना पड़ता है. ही शुड बी ए इंटेलेक्चुअल पर्सन. वो स्कैन करेंगे क्या, जो भी इन्वायरमेंट में, कंप्लीट स्कैनिंग ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट. आफ्टर दैट दे टेक द अजम्पशंस. ओके, so planning typically include looking forward and outlining for the future. The idea of planning is to coincide future result efficiently to the valid advantage of an association. It means glancing into the future, investigating it, and the foretelling it. Planning is therefore precise as a forward-looking capacity based on the predicting. So is it okay? Planning जो है वो आपका futuristic है. It's depend on looking forward. Okay. On the basis of sales forecast, plan are drawn how to produce. Sales forecast से के अकॉर्डिंग क्या हुआ, प्लान बनाया गया. हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट, क्या क्या बनाया गया, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना मार्केट करना प्रोडक्ट को, कितना अवेलेबल होना चाहिए मार्केट लिए, क्या कस्टमर का अवेयर है अबाउट द प्रोडक्ट. All these steps are directed toward a future. ये सब future पे depend होता है. That is why they are futuristic. We can say it is a futuristic. Sale forecast help a company to look forward. ये आपका forward की तरफ move करता है. Okay, is it clear to everyone? So let's move next. Features हमारा क्या है, decisions making. What exactly the decisions making is? Decisions making मतलब क्या होता है कि choosing the best alternative. सबसे बेस्ट ऑप्शंस चूज करना है. ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, तो ये डिसीजंस मेकिंग में क्या है कि यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल. प्लानिंग जो है वो इमेजिन ही नहीं कर सकते ऑप्शन के बिना. जब तक ऑप्शन नहीं हो आपका प्लानिंग नहीं हो सकता है. ओके, क्योंकि एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए. यू कैन से कि अगर मार्केट में आपको सेल्स इंक्रीज करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स इंक्रीज करना है, क्या तो वो कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करेगा, क्या वो मार्केट में उसका प्राइस लेस करेगा, क्या तो वो सेल्स पर्सन अपॉइंट करेगा ताकि वो एडवर्टाइज कर सके अपने प्रोडक्ट का. तो दिस ऑल आर अल्टरनेटिव्स. तो वो चूज करेगा कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है सो दैट दे कैन अर्न द प्रॉफिट. तो डिसीजंस किसका इंपॉर्टेंट है, मैनेजर जो है एक इंटेलेक्चुअल पर्सन कैन टेक द डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस.
तो same way decision making means choosing the best alternative among the alternative available. Planning cannot be imagined in the absence of the alternatives. If there is no alternative available, then there is no need for planning. कोई जरूरी नहीं है plan करना. A thorough analysis of all the alternative help us choose the best one. Okay? Example हम ले सकते हैं क्या, अगर अल्टरनेटिव नहीं हो और अगर अल्टरनेटिव हो, मतलब हम दोनों केस के एग्जांपल्स ले सकते हैं. पहला क्या है कि इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव, अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो फर्म क्या करेगा, फर्म हैज टू इंपोर्ट द रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है एंड देयर इज ओनली वन एजेंसी जो हम इस रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, और एक ही एजेंसी है जो है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. To get it, then the firm has no choice. Firm के पास कोई choice ही नहीं बचा है. There is no alternative. एक ही एजेंसी है तो उसको उसी से ही मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा. Where there are alternatives, अगर alternative है बहुत सारे एजेंसीज है तो फर्म किसका चूज करेगा, जिसका प्राइस मिनिमम होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट को क्वालिटी गुड्स होना चाहिए. तो सेम वे इफ एन इम्पोर्ट, आज आप शॉपिंग करने जाते हो, पहले आप मिंत्रा से देखते हो, अमेजोन से देखते हो, फिर वट एवर साइट डब्ल्यू वीवा वट एवर साइट इज, तो सबसे आप देखते हो कि जहाँ पे जो बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस मिलता है वहीं से आप खरीदते हो. तो सेम वे यहाँ भी वही एग्जाम्पल हुआ है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए फॉर द प्लानिंग. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Sorry. Is it clear to everyone? Yes. Next, planning is a mental exercise. You can say it is like an exercise. It needs an intellectual person. Mental exercise. Planning is a mental exercise, mental process which require higher thinking. Thinking जो है वो higher होना चाहिए. That is why it is kept separate from operational activities. In planning में सबसे important क्या है, assumptions लेना, prediction करना फ्यूचर के लिए. कैसे जब इन्वायरमेंट के पूरे सराउंडिंग के बारे में पता चलेगा तभी ना आप अज्यूम कर सकते हो कि इन्वायरमेंट में क्या नीड है, क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है. बहुत सारे डायमेंशंस हमने पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट में. सो उसके अकॉर्डिंग हमें अजम्पशंस लेना पड़ता है. इकोनॉमिक में क्या चेंजेस आ रहा है, आपका सोशल में क्या है. यस. ओके निशा, प्राइस सेम होता है, बहुत जगह टैक्स कम लगता है, कहीं टैक्स ज्यादा लगता है, क्वालिटी भी मैटर्स होता है. ओके. सो इन प्लानिंग जो है वो इन्वायरमेंट के बेसिस पे अजम्पशंस लिया जाता है. दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. इसके लिए एक इंटेलिजेंस लेवल होना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, प्लानिंग various alternatives are evaluated and most suitable is selected with higher level of intelligence. So it is called, right to call planning is an intellectual process. It is an intellectual process. Planning is the outcoming of mental process rather than the wishful thinking and guesswork. Okay. Planning is a thinking process and it is separate from organization activities. और ये separate है किससे, organization activity से. It is based on logical reasoning. Logical reasoning पे based है, fact है, foresight है, visions है, intelligent है, imagination and sound judgment है. Okay. Example you can take. All the great CEO like Tim Cook of Apple, Mark Zuckerberg of Facebook have an immense capability to imagine. Then these people make sound judgment and help the company attain the phenomenal success. Okay, is it clear to everyone? सबको क्लियर होगा कि प्लानिंग जो है वो आपका मेंटल एक्सरसाइज है. इट नीड्स अ टोटल इंटेलेक्चुअल पर्सन. ओके. सो प्लानिंग जो है वो परवेसिव है, मीन्स इट इज अवेलेबल इन ऑल वेयर, सब जगह सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, वॉट एवर द सेक्टर इट इज, हर जगह आपको चाहिए. How it is separate from organization. Foresight means
मीन्स गुड विजन्स होना चाहिए बिफोर थिंकिंग के लिए. यस इट इज क्लियर. ओके. ऑल परवेसिव. गुड विजन्स मीन्स यू कैन से कि आपका फ्यूचर्स के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए, नीडेड टू बी इन फ्यूचर. मीन्स यू कैन से दैट कि जो भी वो assumption लेंगे, he has the ability to judge what is going to happen in the future. Okay, is it clear, Shabnam? Shabnam, it is clear to you कि what exactly? Yes. Planning is required in all type of organization, in every sector it is required. How, ma'am, my answer, how planning is separate from organization activities. प्लानिंग जो है वो आपका डिफरेंट होता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज. क्यों? प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज. ओके. यस. ऑल परवेसिव. प्लानिंग यू कैन से दैट कि प्लानिंग का काम है डिसीजन बनाना, एंड ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू एक्ट अपॉन दैट डिसीजंस. पहले हमने देखा है कि डिसीजंस, प्लानिंग इज टू मेक द डिसीजंस मेकिंग. प्लानिंग आपका पहला स्टेज है, वो डिसीजन बनाता है, और ऑर्गेनाइजेशन का काम है उस डिसीजंस को फॉलो करना. ओके. ऑर्गेनाइजेशन एक्टिंग ऑन दिस डिसीजंस. ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपका अरेंज करता है आइटम, जो एक्शंस जो है वो ऑर्डरली मैनर में होता है. इज इट क्लियर, निशा? यस इट्स अ क्लियर. ओके. ओके, थैंक यू. All pervasive means planning is available everywhere in all the sector of the organization. Planning is required in all type of organization and at all the level of the management. However, the scope of planning differ. टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. टॉप लेवल जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करता है. दे थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन. सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के वो प्लान करते हैं. मिडिल लेवल का क्या काम है? जो भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं एंड आर इन्वॉल्व इन डिपार्टमेंटल प्लानिंग. एंड लो लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर डे टू डे ऑपरेशन. मतलब हर रोज जो काम हो रहा है, हर दिन जो एम्प्लॉय काम करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग लोअर लेवल क्लियर करेंगे. हेलो अंकिता. ओके. यस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट में प्लान फॉर हिज मंथली टेस्ट. यू कैन से कि स्टूडेंट जो है वो प्लान कर सकता है अपना मंथली टेस्ट. हस्बैंड में प्लान टू गिव अ सरप्राइज गिफ्ट टू हिज वाइफ ऑन द ओकेजन ऑफ द एनिवर्सरी. ओके. तो ये सब क्या है? प्लान करना. द सीईओ ऑफ द कंपनी में प्लान टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. अ सेल्स मैनेजर में प्लान टू अचीव दिस सेल्स टारगेट. मतलब हर लेवल पे प्लान है. देखो हर एक लेवल पे है. सीईओ हो गया आपका टॉप लेवल, स्टूडेंट जो हो गया वो आपका लो लेवल, हस्बैंड, एंड सेल्स मैनेजर में प्लान टू अचीव हिज सेल्स टारगेट. अ वर्कर में प्लान फॉर हिज प्रोडक्शन शेड्यूल्स. तो ये सब क्या है आपके प्लानिंग. इट्स ऑल प्लानिंग मीन्स प्लानिंग इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी स्टेजेस. ईच एंड एवरी स्टेजेस. ओके. यस, प्लानिंग रिवाइज. हेलो अनुप्रिया. सो फीचर्स हमने देखा. सो चलो क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं.
फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है, चलो गिव मी द 2 फीचर्स, वट एवर द फीचर्स मैंने अभी बताया आपको, आप मुझे 2 फीचर्स, रिविजन है अभी, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करो. यस यस एवरीवन, जल्दी जल्दी फीचर्स बताओ मुझे, जल्दी जल्दी फीचर्स बताओ. निशा, अनुप्रिया, शबनम, फीचर्स. फ्यूचरिस्टिक, ओके निशा, वेरी गुड. शबनम, आप बताओ. प्रीतिका, अंकिता, अनुप्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके. यस प्रीतिका, प्लानिंग फॉर फ्यूचर. निशा ने बता चुका है ये फ्यूचरिस्टिक के बारे में. शबनम, परवेसिव कंटिन्यूअस, ओके वेरी गुड. चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम इससे रिलेटेड, प्लानिंग फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ ऑब्जेक्टिव आर नॉट सेट इन द प्लानिंग प्रोसेस. क्या होगा अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हुआ प्लानिंग प्रोसेस में, व्हाट विल हैपन. यस आंसर निशा, शबनम. What will happen? Decisions making contribute to objective primary functions. Okay. इसका आंसर करो. What would happen if objective are not set in the planning? If objective are not set in the planning, what will happen? Yes, what would happen if objectives are not set in the planning process? प्लानिंग प्रोसेस में क्या होगा. यस एंड रिजल्ट नहीं आएगा. ओके प्रीतिका का आंसर. शबनम, यू वांट टू ट्राई. निशा, एल्स आई विल डिस्कस द आंसर. इट डज नॉट ग्रो अप टेक्निकल फ्यूचर. निशा, मैम फिर प्लानिंग का कोई फायदा नहीं. ओके निशा. कुशल गर्ग, थिंकिंग बिफोर डूइंग. ओके क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है. ओके एवरीवन, राइट. शबनम, वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. In the absence of objective, employee working at different level of management would be working in different directions. अगर प्लान ही नहीं सेट हुआ, ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट हुआ, तो जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं सबका तो अलग अलग गोल्स होगा, क्योंकि सबके कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब अपने अपने डायरेक्शन में काम करेंगे एंड द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव नहीं होगा. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. What when planning is not required? प्लानिंग कब रिक्वायर्ड नहीं होता है. प्लानिंग कब रिक्वायर्ड नहीं होता है, एक्सप्लेन. यस जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो. Yes everyone, when planning is not required. When planning is not required. Nisha, Shabnam, Ankita, answer this question. When planning is not required. Planning कब required नहीं होता है. It's a revisions class, तो जल्दी जल्दी आंसर करो. Please keep your finger busy. Ma'am, planning is a continuous and pervasive, so it is required everywhere. When? कब required नहीं होता. I asked this question. I didn't ask it where it is required. When? जब कोई दोबारा ऑब्जेक्टिव ना हो. ओके दूसरा. Yes निशा, आई एम आस्किंग कि कब रिक्वायर्ड नहीं होता है. कब? When? During selection of shareholder. I asked कब required नहीं होता है. I am not asking कि कब required होता है. I am asking when it is not required. When we don't want to do anything. Okay.
when there is no objective left to the company. Okay, restriction place. Okay, hello Mukund, objective ना हो तो planning is not required when there is कोई option नहीं हो, no alternative to achieve the objectives, then planning is not required. मैंने आपको पढ़ाया था डिसीजंस मेकिंग में दो एग्जाम्पल भी दिया था, व्हेन देयर इज ऑल्टरनेटिव एंड व्हेन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. ओके, जब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट, देन उसमें आपको प्लानिंग नहीं रिक्वायर्ड होता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो यू हैव टू डू. यस यस मैम, जब कोई ऑल्टरनेटिव ना हो तो. यस निशा. चलो अब इम्पोर्टेंस देखते हैं. रिवीजन हमारा हो गया. वेट अ सेकेंड. इम्पोर्टेंस का रिवीजन करते फिर हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन स्टार्ट करेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के काफी इम्पोर्टेंस है. प्लानिंग के इम्पोर्टेंस जो है बहुत सारे हैं. देखते हैं क्या क्या है. किसी को याद होगा? इट्स अ रिविजन क्लास. चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. गिव 3 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इट्स अ रिविजन क्लास. मैंने पढ़ाया है, आपको रिवाइज करा रही हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. शबनम मैंने होमवर्क भी दिया था. इम्पोर्टेंस फीचर्स याद करके आने, पढ़ के आने, तो जस्ट आंसर करो. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट, गिव एनी 3 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. यस, एनीवन कैन ट्राई. ओके, मुकुंद ने डिसीजंस मेकिंग 3 इम्पोर्टेंस. Shabnam, provide direction, reduce risk of uncertainty overlapping. Very good, Shabnam. Anyone more wants to try? Sorry, मैंने आंसर दिखा दिया. Still, you have got the option. Yes, importance of planning, reduce risk. Okay, innovative ideas, decisions making. Okay, Shabnam, very good. चलो देखते हैं. Planning provide the directions, reduce the risk of uncertainty. Planning reduce overlapping and wasteful activities. Planning promote innovative ideas. तरह तरह के आइडियाज को प्रमोट करते हैं. प्लानिंग जो है वो फैसिलिटेट करते हैं डिसीजंस मेकिंग. इट हेल्प्स इन डिसीजंस मेकिंग. एंड प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. इट मीन्स इज सेट द टारगेट कि इतना हमें अचीव करना है. जस्ट लाइक यू सेट द टारगेट, यू हैव टू स्कोर 98% इन द एग्जाम, तो यू अकॉर्डिंगली प्लान योर way of study, how to study, what to study, which topic is important. Okay शबनम, I will make you clear again. आपने I think फिर से ये आपको डाउट है. मैं तो आपको रियल एग्जाम्पल लेके बताई. तो स्टैंडर्ड मतलब टारगेट सेट करना. जस्ट लाइक यू सेट द टारगेट कि आपको बोर्ड्स कमिंग एग्जाम्स में कितना परसेंट लाना है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे. चलो एक एक करके हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं. प्लानिंग डिक्रीजेस द चांस ऑफ रिस्क. अगर प्लान करोगे तो रिस्क भी कम होगा. रिस्क भी कम होता है. प्लानिंग जो है वो एक्टिविटीज विच परमिट अ मैनेजर टू लुक फॉरवर्ड. मतलब क्या है कि मैनेजर क्या करते हैं, वो अजम्पशंस करते हैं. किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के बेसिस पे वो अजम्पशन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं. तो इट जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड एंड प्रेडिक्ट द चेंजेस. प्लानिंग आप पास्ट के बारे में कभी प्लान नहीं करते, आप हमेशा फ्यूचर के बारे में ही प्लान करते हो. Okay, by determining in prior the task to be completed, planning notes the way to deal with changes and unpredictable effects. मतलब कि अगर आप प्लान पहले करोगे तो जो भी चेंजेस होना है आप चेंज कर सकते हो. रिस्क जो भी आएगा आप उसको फेस कर सकते हो. हम लोग के टारगेट सेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने पे कंपेयर कैसे करेंगे? दिस इज कॉल्ड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर यू. वेरी गुड निशा. यस,
Shabnam, you can see the Nisha comment. Planning decreases the overlapping and wasteful activities. Overlapping means excess activities को ये remove करता है. Unnecessary activities को remove करेगा. Planning work as the foundation of organizing the activities. Means organization जो भी plan करेंगे वो keeping in mind सारे डिपार्टमेंट के बारे में सोच के उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान बनता है. तो जो भी डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है वही डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है. तो बट डिपार्टमेंट का रोल जो है वो डिफरेंट होता है कि उसके वे ऑफ वर्किंग जो है वो डिफरेंट होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के. सो देयर शुड बी कंप्लीट कोऑर्डिनेशंस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. अगर कोऑर्डिनेशंस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है नहीं अचीव कर पाएंगे. So if a manager, non-manager and all the employee are following the course of action according to the plan, तो there कभी भी confliction नहीं आएगा. There never be any confusion. Sure, Nisha, I will give you the PDF of my slide. Planning decreases overlapping and wasteful activity. Planning work as the foundation of organizing the activity and the purpose of distinct branches, department and people. It assists in avoiding confusion. Since planning guarantees preciousness and understanding in action, work is conducted on easily without delay. ठीक है, वर्क जो आपका easy way में conduct होता है without any delay. Thorough planning. The effort of various individuals and departments are coordinated properly to eliminate the overlapping and wasteful activity. Useless and wasteful activity are reduced. Okay? वहाँ पे कोई confusions या misunderstanding नहीं होता है. It is easier to detect inefficiencies and take the corrective measure to deal with them. So is it clear to everyone? Yes. The base or yardstick or the standard for comparing actual performance is in controlling is given by planning. Okay, sure, Shabnam. Planning encourages the innovative ideas. Yes, can you explain me कि innovative क्या होता है? चलो अपनी meaning it's a revision class तो आप लोग मुझे explain करो कि innovative क्या होता है? What else the innovative means? Yes. Is it clear? चलो innovative के बारे में बताओ. Something different. Okay, Shabnam, you can. Yes. शिवनम आपने पूछा था the base or yardstick or the standard for comparison actual performance in controlling is given by the planning. तो इसका मतलब क्या है कि a fact or a standard you can which you can judge the success or value of something. मतलब मैनेजर जो है वो जज कर सकते हैं. इट्स अ फैक्ट यू कैन से कि क्योंकि प्लानिंग जो है आपका वो अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है. तो ये कैपेबिलिटी होना चाहिए फॉर जजमेंट के लिए सो दैट कि यू कैन गेट ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सके. ओके, इज इट क्लियर टू यू सबनम? यस निशा यूनिक. यस
थिंक डिफरेंट यूनिक यस एवरीवन इज राइट प्लानिंग जो है वो इनकरेज करता है आपका इनोवेटिव आइडियाज सिंस इट इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट new approaches can take the form of actual plan. Okay, it is the most challenging project for the management as it led all the planned action pointing to growth and for the business. Planning जो है वो आपका innovative ideas है means it require a high thinking चाहिए and it is an intellectual process you can say it is an intellectual process it is a high thinking प्लीज आप लोग कीवर्ड्स को ध्यान रखो हाई थिंकिंग इनोवेटिव में आप लिख सकते हो हाई थिंकिंग आप बस कॉन्सेप्ट लिया करो कीवर्ड्स को ध्यान रखो intellectual process it is an intellectual process okay so these all are the keywords that you can keep in mind ठीक है सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर तो इसलिए स्कोप क्या है बेटर आइडिया के लिए ज्यादा स्कोप है बेटर मेथड्स के लिए ज्यादा स्कोप है बेटर प्रोसेस के लिए ज्यादा स्कोप है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब प्लानिंग जो है वो हर मैनेजर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में थिंक करता है हर मैनेजर जो है वो अलग अलग अजम्पशंस लेता है सो हर एक मैनेजर के ये इन्वॉल्व करता है क्या क्रिएटिविटी यू कैन से क्रिएटिविटी ओके Okay, is it clear to everyone? Yes? Is it clear? Intellectual process means a person holding a high degree of intelligence, high degree of knowledge, you can say. You can say a critical thinking, research. Yes, Nisha, clear? मीनिंग समझ में आ गई आपको व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेलेक्चुअल यस नेक्स्ट प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट न्यू आइडिया कैन टेक द शेप of concentrate plan and innovations okay thanks innovation is required to modify the plan for the growth and expansion of the business okay so example you can take कि in a company of real estate there are different department रियल स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट है जैसे हम बोल सकते हैं मार्केटिंग एचआर सेल्स एंड फाइनेंस सो ईच डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना टारगेट है जॉब है सो दिस ये ओवरलैपिंग का एग्जांपल है दिस रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट दिस इज एग्जांपल ऑफ ओवरलैपिंग ये ओवरलैपिंग के एग्जांपल्स है ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन यस प्लानिंग एड्स डिसीजंस मेकिंग पहले भी हमने फीचर्स में भी पढ़ा कि प्लानिंग जो है वो आपका डिसीजंस मेकिंग है ठीक है प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप जो डिसीजन बनाता है एंड निशा ने पूछा था ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग में क्या डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस प्लान को उस डिसीजंस को मूविंग फॉरवर्ड करता है उसको और प्लान जो सिर्फ डिसीजंस देता है It encourages the manager to look into the future and make a decisions from among the several alternative plan of actions. The manager has to assess each option and pick the most viable plan. हर एक ऑप्शन को वो एक अच्छे से देखेगा मीन्स यू कैन से दैट वो पूरी तरह उसको स्कैन करेगा और जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको वो चूज करेगा ओके इज इट क्लियर Yes. Next, through planning, manager compare different alternative with the benefits and limitations. Planning help make a rational decision by choosing the best, most profitable alternative, which may bring lower cost, adaptable to organization and the situations. Example you can take a group of marketing expert chalk out different alternatives. Evaluate this alternative and finally select the best alternative.
बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जो है वो सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर टू यू? यस एवरीवन. हेलो प्रथम. प्रोवाइड डायरेक्शंस. मैनेजमेंट प्लानिंग जो है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, कौन से वे में जाना चाहिए, दिस वे दैट वे. निशा, इज इट क्लियर टू यू? शबनम, अंकिता, प्रतिका, इज इट क्लियर? प्रथम, नॉट क्लियर. अभी तो क्लास आए हो आप. प्रोवाइड डायरेक्शंस. By stating in advance how work is to be done, planning provided directions for action. Okay, Kritika. Shabnam. Planning guarantee that goals and aim are distinctly defined so that they operate as a pattern for determining what direction should be taken. Planning makes the goals and objectives clear in the mind of all the individual working in different capacity. Lack of planning brings lack of coordinations. A car manufacturing company give target to employee who decide the directions of work. Reduce the risk of uncertainty means प्लानिंग जो है वो अनसर्टिनिटी को रिस्क को reduce कर सकता है पर eliminate नहीं कर सकता है. ओके, इज इट क्लियर? यस. As example, it an organization might ensure its inventory. मतलब क्या है कि वो अपना स्टॉक रखा पर एक्सीडेंट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा उसका एसेट्स, ये उसको पता नहीं था. तो सो द फ्यूचर इज अनसर्टेन. फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है. येट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय प्रॉपर प्लानिंग. उस अनसर्टेनिटी के बचने से, उस रिस्क को बचने से मिनिमाइज करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हम ले सकते हैं. सो इज इट क्लियर? यस, सबको क्लियर हो गया है? ओके. सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. टारगेट, सेट द टारगेट. यस, यू कैन से टू सेट द टारगेट. यस. Planning involves the setting the goals, and these predetermined goals are accomplished with the help of managerial functions like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning provides standard against which actual performance is measured. Without standard, the actual performance of each individual department and divisions cannot be measured. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्या. टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो वो डिसाइड किया कि वो इतना मैन्युफैक्चर करेगा. शबनम, दिस एग्जाम्पल इज फॉर यू. आप प्लीज क्लियर कर लो ये सेट. मतलब कि एक कंपनी जो टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग, उसका टारगेट था कि वो 8,000 टॉर्च बनाएगा दिसंबर के मंथ में. पर हाउएवर द पैसेज ऑफ 15 डेज कंप्लीट हुआ, लेकिन 15 डेज में वो 2,000 ही बना पाया. So the company decide to revise its standard for production. मतलब वो टारगेट सेट करा था इतना करना पर हो नहीं पाया, तो जिसके कारण वो रिवाइज कर रहा अपना स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन. ही इज रिवाइजिंग इट्स टारगेट अगेन. सो इज इट क्लियर? लैक ऑफ प्लानिंग. चलो एमसीक्यू सॉल्व करते. लेट्स मूव, लेट्स डू सम क्वेश्चन so that to give some break to your mind. And lack of planning brings chaos and lack of coordination. Identify the statement and choose the correct answer. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning provides directions, none of the above. Anyone? Yes. Answer. Answer me. It's a D. Okay. Anyone more? Shabnam, Nisha. Planning provide directions. Okay. Anyone more? चलो देखते हैं कि कौन सा हमारा था. अभी हमने जस्ट पढ़ा था.
Lack of coordination. Nisha, you're right. It's a planning. Provides the direction. Very good. You are attentive in my class. I think you are new to my class. Planning provides the directions. क्या आपने पहले अटेंड किया था क्या मेरा क्लास? Without dash, actual performance of each individual department and divisions cannot be measured. Planning, direction, coordination, standard. Without dash, actual performance of each individual's department and divisions cannot be measured. Yes, anyone? Planning provides direction. Okay. Answer. Answer mean Shabnam, Nisha. अंकिता ने एक आंसर दिया 1A. शबनम ने भी A. Okay. Let's see. कीर्ति ने निशा yes ma'am but Unacademy पे अटेंड किया था with different name. Okay निशा. Without dash, actual performance of each individual divisions department हमने अभी देखा था. Yes. डिपार्टमेंट का हमने अभी देखा था क्या था. It's a set standard. It's a standard for controlling. Standard. सबका आंसर गलत. Standard for controlling. Planning provides standard against which actual performance is measured. Without standard, the actual performance of each individual department and divisions cannot be measured. Okay. So let's move to the next question. Planning provide direction. What is direction in planning? Can anyone? Can anyone? Planning provide the directions. What is direction in planning? What is direction in planning? Anyone? Yes, planning provides the direction. What is directions in planning? The way of doing thing. Okay, Pratika. Anyone more? Yes, anyone more? Yes, anyone? Yes, anyone? Planning provides the direction, standard, way to proceed. Planning provides directions and directed the activities toward the achievement of goals. Planning helps to build a roadmap to achieve the goals of the organization and direct all the activities toward the course of the action. Yes, right, everyone. Planning may have different alternative and the managers compare this alternative to achieve the best feasible alternative. Identify which point of importance is highlighted here. Identify. Yes. Identify the which point of importance is highlighted here.
Yes. Yes, everyone. Innovative ideas. Okay. Anyone more? प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, डिसीजंस मेकिंग में आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, तो यही पूछी थी। विच पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज हाईलाइटेड हियर। ड्रीम कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली व्हेन मैनेजर थिंक इन एडवांस what to do and how to do it. Name the functions of management indicated by the statement. ये क्वेश्चन आ चुका है आपका 2014 में। Dream can be turned into reality only when managers think in advance what to do and how to do it. Name the functions of management indicated by this statement. Top level management, okay? Let's see. It's a planning. Okay. आपका लिमिटेशंस जो है, वेरियस लिमिटेशन है। इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, देयर आर वेरियस लिमिटेशंस। पहला है प्लानिंग जो है वो रिजिड है, इट इज यू कैन से रिजिड, इट कांट बी चेंज। प्लानिंग जो है वो वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट है, it reduces creativity, it involves a huge cost, it is a time consuming process, planning does not give guarantee success। मतलब ये सारे लिमिटेशंस है, डीमेरिट्स है, वो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, कीवर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कीवर्ड्स क्या क्या कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है फॉर सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर इन द केस स्टडी, सॉल्विंग इन केस स्टडी एंड बोर्ड्स के पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगी आप लोग को। ओके, सो इज इट क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone. Do subscribe me on YouTube channel and comment me. Use my code SNEHA10 SNEHE10 SNEHA10 for getting the subscription and getting the 10% discount, and hit the bell icon for the notifications. Nisha, I will provide you the PDF, don't worry, and join me on Telegram to get the latest update. And आज शायद मेरा स्पेशल क्लास ना हो, आई विल कंफर्म यू बिफोर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। स्पेशल क्लास जनरली मेरा 9:30 पे होता है, अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है हमारा। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा अगर स्पेशल क्लास का, देन आई विल टेक द मेगा क्विज। ओके, अकाउंट्स एंड बीएसटी से दोनों मिक्सचर मेगा क्विज होगा, एंड देयर विल बी अ प्राइजेस आल्सो, सो प्लीज ज्वाइन मी देयर। Okay, thank you everyone. Bye bye. Have a nice day. Thank you everyone.